सो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्यूमर्स ऑफ द मिडिल ईयर. ठीक है. सो विल बी रीडिंग अबाउट द ट्यूमर्स ऑफ मिडिल ईयर. सो मिडिल ईयर में बस 5% ट्यूमर होता है, ज़्यादा होता भी नहीं है. So tumors of middle ear and mastoid can be divided into primary tumor and secondary tumor. ठीक है. प्राइमरी ट्यूमर में क्या आएगा, बिनाइंग आता है, मैलिग्नेंट, एंड सेकेंडरी में देन वही सब मेटास्टासिस एंड एवरीथिंग. सो बिनाइंग में न्यूप्लास्टिक आ जाएगा, पैरागैंग्लियोमा, स्क्वानोमा ऑफ द फेशियल नर्व, हिमैंजियोमा, देन कार्सिनॉइड एंड एडिनोमा. ये सारे बिनाइन के नियोप्लास्टिक हो जाएंगे. द नॉन नियोप्लास्टिक विल बी कंजेनाइटल कोलिस्टोमा, को कोरिएस्टोमा, aberrant internal carotid artery, high jugular bulb. These tumors form differential diagnosis of the glomus tumor. देन मैलिग्नेंट में क्या आ जाएगा, कार्सिनोमा ऑफ द मिडिल ईयर, सार्कोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा. देन सेकेंडरी ट्यूमर्स में क्या हो जाएगा, फ्रॉम एडजेसेंट एरिया, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर कैनाल से मिडिल ईयर में पहुंच गया, पैरोटिड ग्लैंड से या फिर नेसोफैरिंग से, या मेटास्टैटिक, एग्जांपल फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, या फिर ब्रोंकियस, किडनी, थायराइड, प्रोस्टेट, जीआई ट्रैक्ट. ओ हाय शशांक, हाय. आप अपना भी पढ़ो, यहाँ पे भी रहो. देन वी हैव पैरागैंग्लियोमास यानी ग्लोमस ट्यूमर. ग्लोमस ट्यूमर क्या होता है, कॉमनली बट इनकरेक्टली कॉल्ड एज ग्लोमस ट्यूमर. ग्लोमस ट्यूमर इनकरेक्टली बोला जाता है इज द कॉमन बिनाइन ट्यूमर. क्यों इनकरेक्टली बोला जाता है, सो द टर्म ग्लोमस वॉज ओरिजिनली यूज फॉर ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द आर्टेरोवीनस फॉर्मेशन, द ग्लोमस बॉडीज in the dermis of extremities and subungual areas and have been erroneously for paraganglioma elsewhere. So the most common type of benign tumor of the middle ear, paraganglioma, take care, and is so named because of its origin from paraganglionic tissue. The latter is a neuroendocrine tissue derived from the neural crest, which later migrates into the parasympathetic nerves of head and neck during embryonic life. According to their location, such tumors have been called the carotid body tumor. At its bifurcation of the carotid artery, jugulotympanic, jugular bulb and tympanic cavity, glomus intravalgae at the upper end of the vagus and several other sites. So jugulotympanic paragangliomas occur in the dome of the jugular bulb or the middle ear promontory. Middle ear का promontory है ना, वहाँ पे होता है. Along the course of the tympanic branch, जैसे कि Jacobson's nerve of the ninth. So microscopically, paraganglioma tissue appears as cell nest, zelbalin कहेंगे या फिर sheet or ribbons, and consists of two types of cell. Type 1 या chief cell, which are capable of producing catecholamines and other vasoactive substance, and type 2 जिसको sustenicular cells कहेंगे, which are considered modified squamous cells. So etiology and pathology क्या होता है, the tumor is often seen in middle age, 40 to 50 years की female are affected 5 times more. फीमेल्स मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है. मिडिल एज वाले फीमेल्स जो होते हैं उनको ये हो जाता है पैरागैंग्लियोमा. So it is a benign, non-capsulated but extremely vascular neoplasm. Benign होता है, non-capsulated होता है, बहुत ज़्यादा vascular neoplasm होता है. Its rate of growth is very slow and several years may pass before there is a change from the initial symptom. Tumor is locally invasive. Locally invasive होता है. There is abundance of thin-walled blood sinusitis
with no contractile muscle coat, accounting for profuse bleeding from the tumor. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो. फॉर पर्पस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू टाइप्स आर डिफरेंशिएटेड: ग्लोमस jugulare and glomus tympanicum. So glomus jugulare क्या होता है? They arises from the dome of the jugular bulb, invade the hypotympanic and jugular foramen, causing neurological signs of ninth and 12th cranial nerve involvement. They may compress jugular vein and invade its lumen. So this is glomus jugulare. Then we have glomus tympanicum. So they arise from the promontory of the middle ear and causes oral symptoms and sometimes with facial paralysis. Spread कैसे होता है इनका? Spread of glomus tumor कैसे होता है? Tumor में initially fill the middle ear. Middle ear को पहले fill करेगा and later perforate through the tympanic membrane, present as a vascular polyp in the external ear canal. It may invade labyrinth, petrous pyramid and the mastoid. ठीक है. It may invade jugular foramen and the base of the skull, causing ninth and 12th cranial nerve palsies. Spreading through the eustachian tube, it may present in nasopharynx. It may spread intracranially to the posterior and middle cranial fossa. Metastatic spread to the lung and bone is rare but seen in 4% cases. Metastatic lymph node enlargement can occur. Clinical feature क्या है? In 90% of the cases, symptom pertain to the ear. When tumor is intratympanic, जब ट्यूमर intratympanic होता है, 1 second. So earliest symptoms are hearing loss, tinnitus. Hearing loss is conductive and slow progressive. Tinnitus is pulsatile. ठीक है, जो सुनाई नहीं देगा वो ना, वो लो स्लोली प्रोग्रेसिव होता है और कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होता है. टिनिटस जो है वो पल्सटाइल होता है एंड स्विशिंग कैरेक्टर, सिंक्रोनस विथ पल्स. या शशांक या synchronous with pulse and can be temporarily stopped by carotid pressure. Otoscopy जो होता है shows a red reflex through the intact tympanic membrane. Red reflex. I'm so sorry. Oh my god. ओटोस्कोपी रेड रिफ्लेक्स दिखाएगा. राइजिंग सन अपीयरेंस दिखेगा. ठीक है, राइजिंग सन अपीयरेंस. उगता हुआ सूरज किस कैंसर में दिखता है? ग्लोमस जुगुलर या पैरागैंग्लियोमा. ग्लोमस ट्यूमर में दिखता है. या आई ड्रिंक वाटर. आई एम ड्रिंकिंग वाटर. सो राइजिंग सन किस में मिलेगा? पैरागैंग्लियोमा यानी ग्लोमस ट्यूमर में मिलता है. ठीक है, राइजिंग सन अपीयरेंस, रेड रिफ्लेक्स is seen when tumor arises from the floor of the middle ear. Sometimes tympanic membrane appears bluish and may be bulging. So pulsation sign क्या होता है? Brown sign is positive. Pulsation sign या फिर brown sign भी positive होगा. That is when ear canal pressure is raised with Siegel's speculum. Tumor pulsates vigorously and then blanches. Reverse happens when release of the pressure is there. Yeah, my hiccups is okay now. Yeah, better now, better Shank, better. सो पल्सेशन साइन या फिर ब्राउन साइन भी दिखेगा जब ईयर कैनाल का प्रेशर जब हम लोग रेस करेंगे सीगल स्पेक्यूलम से. तो देखेगा कि ट्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा पल्सटाइल, विगरसली पल्सटाइल कर रहा है, पल्स ऐसा करके हो रहा है और उसके बाद ब्लैंच हो जाएगा.
उसको पल्सिटाइन या ब्राउन साइन कहते हैं, ठीक है। अब व्हेन ट्यूमर प्रेजेंस एज पॉलिप इन एडिशन टू हियरिंग लॉस एंड टिनिटस, देयर इज हिस्ट्री ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर, either spontaneously or attempts to clean it. So, dizziness or vertigo and facial palsy may appear. Earache is less common than in carcinoma of the external and middle ear and helps to differentiate it from them. मतलब ईयर एक नहीं करेगा, पर डिजीनेस, वर्टिगो, फेशियल पैल्सी ये सब हो सकता है. ओटोरिया में occur due to the secondary infection, and the condition may stimulate chronic suppurative otitis media with polyp. Examination reveals a red vascular polyp filling the canal, and it bleeds readily and profusely on manipulation and biopsy. So, then we have cranial nerve palsies. This is the late feature appearing several years after oral symptom. Cranial nerve palsies होगा. So ninth and 12th cranial nerve may be paralyzed, and there is dysphagia, hoarseness with unilateral paralysis of the soft palate, pharynx and vocal cord. ये सब का paralysis हो जाएगा with weakness of the trapezius and sternocleidomastoid muscle. ठीक है. Then tumor may present as a mass over the mastoid or in the nasopharynx. Signs of intracranial involvement may also occur. Then a person can have acute bruit हो सकते हैं. All stages of all stages auscultation with stethoscope over the mastoid may reveal uh, systolic bruit. Some glomus tumors secrete catecholamines and produce symptoms like headache, sweating, palpitation, hypertension and anxiety. क्यों? क्योंकि कैटेकोलामाइंस रिलीज कर रहा है एंड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. देन रूल ऑफ 10 क्या होता है? रिमेंबर द 10% ऑफ द ट्यूमर आर familial, 10% are multicentric, occurring at more than one site. Functional tumor, these are secreting catecholamines, are rare in head and neck and constitute 3%. So क्या बोला कि 10% होता है मल्टीसेंट्रिक होता है, मतलब एक से ज़्यादा जगह देखने को मिलता है. मल्टीसेंट्रिक बहुत सारे जगह पाया जाता है. एंड 10% जो होता है फेमिलियल होता है. देन डीडी क्या है ग्लोमस ट्यूमर का? ग्लोमस ट्यूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूरा भर दिया गया है. एंड देन वी हैव कार्सिनोमा ऑफ सार्कोमा सेकेंडरी ट्यूमर, बहुत छोटा सा. ओके, डीडी क्या है? सो अर्ली ग्लोमस टिम्पैनिकम ट्यूमर शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर पैथोलॉजीज सीन बिहाइंड एन इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सच एज genital cholestoma, adenoma, schwannoma, hemangioma, aberrant internal carotid artery, and high jugular bulb. So, congenital cholestoma, it appears whitish mass behind the intact tympanic membrane. कोलेस्टियोमा जो है वो वाइट कोलेस्टियाटोमा, वो वाइट मास की तरह दिखेगा behind the tympanic membrane. It is seen mostly in the anterior superior quadrant of the tympanic membrane, but may also be seen in the posterior superior anterior inferior quadrant also. There is no history of ear discharge or perforation or any surgical procedure. Congenital cholesteoma develops from the epithelioid formation during the development of the ear, epidermoid formation, ठीक है, and mostly seen in male children in the ratio of 3:1. देन डीडी क्या हो सकता है ग्लोमस ट्यूमर का? ठीक है, तो पहला तो हो सकता है कंजेनाइटल कोलेस्टियोटोमा, दूसरा हो सकता है एडिनोमा.
It is the vesicular non-capsulated tumor made up of epithelial and neuroendocrine cells which are wrapped around by ossicles without destroying the bone. तीसरा क्या हो सकता है कि schwannoma of the facial nerve हो गया होगा. तो arises from the swan cell at the tympanic segment of the facial nerve and may not be visible through the tympanic membrane. It may present with facial paralysis, conductive hearing loss if present, close to the ossicular chain, and giddiness, with erosion of the lateral semicircular canal of the level of second genu. Then other DDs of glioblastoma could be hemangioma of the facial nerve. पहले schwannoma of the facial nerve था, फिर hemangioma of the facial nerve है. It arises from the facial nerve or its geniculate ganglion. Hemangioma are extraneural and causes facial palsy by pressure. They may cause recurrent facial weakness and gadolin enhanced MRI or CT scan can help in diagnosis. They can be dissected out from the nerve, maintaining the latter's continuity. Then the person can also have aberrant internal carotid artery. So it presents as a pink pulsatile mass in the anterior part of the middle ear. It is sometimes incidental, found on tympanotomy. It can be diagnosed by HRCT, temporal bone, and MR angiography. Other DDs of glomus tumor could be high jugular bulb, so present as a bluish mass in the hypotympanum and mesotympanum in contact with the tympanic membrane, stimulating glomus tumor. MRI can help to differentiate the two. Then other DD of glomus tumor could be choristoma. This is the term used for normal tissue present in the abnormal place. A normal salivary gland tissue may be present as a mass in the middle ear. It is non-neoplastic and does not grow. Then diagnosis कैसे करेंगे हम लोग? So in addition to thorough history and physical examination, the patient is checked up to find out the extent of tumor, other associated glomus tumor, and serum level of catecholamine or their breakdown product in urine, जैसे कि वेनिल मेडिलिक एसिड या फिर मेटानेफ्रिन. कैटाकोलामाइन का हम लोग देखेंगे कि ब्रेकडाउन यूरिन में हुआ है कि नहीं, या फिर एसोसिएटेड ग्लोमस ट्यूमर देखेंगे. ठीक है, जैसे सीटी हेड स्कैन कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए. यूजिंग बोन विंडो 1 mm थिन सेक्शन आर कट. It helps to diagnose glomus tympanicus from glomus jugulae tumor by identifying the corticojugular spine, which is eroded in later. It is eroded in glomus jugulae, corticojugular spine जो होता है erode कर देता है. CT scan also helps to differentiate between the tumor of the aberrant carotid artery high and dehiscent jugular bulb. ठीक है. Then MRI करवा सकते हैं हम लोग. So MRI, it is a soft tissue extent of tumor. Magnetic resonance angiography and venography helps to delineate invasion of jugular bulb and vein or compression of the carotid artery. Then we can do CT head या फिर MRI together. They provide an excellent preoperative guidance in the differential diagnosis of the petrous apex lesion. Then we can do 4 vessel angiography. It is necessary when CT head shows involvement of the jugular bulb, carotid artery, or intradural extension. It also helps to delineate any other glomus tumor as they may be multiple, find the feeding vessel and permit embolization of the tumor if required. Then a diagnosis कैसे कर सकते हैं? Brain perfusion and flow studies. They are necessary when tumor is
pressing on the internal carotid artery if the case needs surgery, brain perfusion, and adequacy of the contralateral internal carotid artery and circle of Willis can be asserted. If needed, xenon blood flow and isotopic studies are done for precise blood flow, the risk of stroke, and the need for surgical replacement of internal carotid artery. Then we can have embolization if the tumor, if large tumor, in large tumor, embolization of feeding vessel 1 to 2 days before operation helps to reduce blood loss. Then we can do biopsy. So, pre-operative biopsy of the tumor for diagnosis is never done. Clinical and radiographic features are very characteristic to make diagnosis. Tumor is very vascular and bleeds profusely. There is also likely to injuring the high jugular bulb and aberrant internal carotid artery if diagnosis is mistaken. Now, what is the treatment of this? So, surgical removal, radiation, embolization, and combination of the above techniques. सर्जिकल अप्रोच टू ग्लोमस ट्यूमर क्या है? ट्रांस कैनाल अप्रोच suited for limited glomus tympanicum tumor where the entire circumference of the tumor is visible. Only tympanotomy will suffice to gain access to the tumor. Then person can do hypotympanic approach suited for tumors limited to the promontory and excision of the hypotympanum but not into the mastoid. Superior based tympanomeatal flap is raised by posterior auricular approach. Bony inferior tympanic ring is drilled away to see the lower limit of the tumor. Then extended facial rhesus approach used for small glomus tympanicum extending into the mastoid but not into the jugular bulb where extensive modified radical operation is done. Mastoid neck approach में क्या होता है? Use of glomus jugular tumor not extending into the internal carotid, posterior canal, fossa or neck. Then infratemporal fossa approach of fish used for large glomus jugular tumor. Then we have transcondylar approach used for tumors extending towards the foramen magnum. Usually they are recurrent glomus jugulare tumor. This approach gives access to craniocervical junction which with exposure to occipital condylar and jugular tubule. Radiation. So due to radiation does not cure the tumor but may reduce its vascularity and arrests its growth. Radiation is used for inoperable tumors, residual tumors, recurrence after surgery, and for older individuals when extensive skill based surgery is not indicated. Then embolization. So embolization is used to reduce the vascularity of the tumor both before surgery or is the sole treatment in the inoperable patients who have received radiation. So these are the transcondylar approach. Then carcinoma of the middle ear. So रेयर कंडीशन होता है 20,000 न्यू पेशेंट एग्जामिन उसमें एक केस मिलता है. कॉमनेस्ट प्राइमरी ईयर मैलिग्नेंसी होता है. ईटियोलॉजी क्या होता है? 40 से 60 साल को अफेक्ट करता है. फीमेल में मोर कॉमन होता है. लॉन्ग स्टैंडिंग ईयर डिस्चार्ज की वजह से सीए हो जाता है. बार बार इरिटेशन पॉजिटिव फैक्टर होता है. Primary carcinoma of the mastoid ear cell is also seen in radium dial painter. Radium dial painter. So pathology क्या हो जाता है? Tumor may arise primarily from the middle ear or be an extension of the carcinoma of the deep meatus. Squamous cell variety is by far the most common. ठीक है. एडिनोकार्सिनोमा जो होता है मैं ओकेजनली भी सीन इट अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर एलिमेंट ऑफ द मिडिल ईयर. सो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर क्या है?
To begin with, carcinoma destroys ossicles, facial canal, internal ear, jugular bulb, carotid canal, deep bony meatus, and mastoid. It may spread into the petrous pyramid towards the apex. Dura is usually resistant. It may spread into the parotid gland, temporomandibular joint, infratemporal fossa, and down into the eustachian tube to the nasopharynx. Lymph node enlargement occurs late. Clinical feature क्या है? The patient often presents with clinical pictures stimulating chronic suppurative otitis media. However, the following features in the age group of 40 to 60 years may arouse a suspicion of the malignancy. Chronic foul smelling discharge when blood strained, pain which is usually severe and comes at night, facial palsy, friable hemorrhagic granulation or polyp, appearance of or increase in hearing loss or vertigo. Diagnosis. So definitive diagnosis only made on biopsy. The extent of disease is judged by clinical and radiological examination of the CT scan. CT scan से ही पता चल पाएगा कितना है. एंजियोग्राफी यूजफुल फॉर द असेसमेंट ऑफ द डिसीज. एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, बायोप्सी से ही पता चलता है. सो ट्रीटमेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जिकल एंड रेडियोथेरेपी गिव्स बेटर रिजल्ट. सर्जरी कंसिस्ट ऑफ रेडिकल मैसेक्टमी एंड सब टोटल या फिर टोटल petrosectomy depending upon the extent of the tumor. Radiotherapy alone is given as a palliative measure when tumor involves cranial nerve 9th and 12th or spread into the cranial cavity or nasopharynx. Then we have sarcoma. तो सार्कोमा में रैप्डोमायोसार्कोमा होता है. ये देख सकते हैं, इस 4 साल के बच्चे को है. हाँ, फेशियल पाल्सी भी उस साइड में है इस बच्चे को. सर मायोसार्कोमा क्या होता है? रेयर ट्यूमर होता है, मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन, अराइजेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मसल टिश्यू एंड प्लूरीपोटेंट mesenchyme. In early stages, it mimics chronic suppurative otitis media with ear discharge and polyp or granulation. Facial palsy occurs early. डायग्नोसिस इज़ मेड ओनली ऑन बायोप्सी. बायोप्सी में ही डायग्नोसिस होगा. प्रोग्नोसिस पुअर होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी इज़ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. सर्जरी इज़ डन इन सेलेक्टेड लोकलाइज्ड लीजन. अदर सार्कोमा क्या होता है? ओस्टोसार्कोमा, लिम्फाइब्रोमा, फाइब्रोसार्कोमा, देन कॉन्ड्रोसार्कोमा रेयर होता है. ये सब डिस्टेंट मेटास्टेसिस सीन इन लंग या फिर बोन. प्रोग्नोसिस पुअर होता है. सेकेंडरी ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus, parotid gland or nasopharynx may invade middle ear cleft either through perforated pathway or bone erosion. Sometimes temporal bone is seen as a site of distant metastasis in advanced cases of carcinoma of the breast, bronchus, prostate, kidney or GI tract. Thank you guys. हो गया.